सो आई एम एन इंट्रोवर्ट. इनफैक्ट मैं जब भी कोई पर्सनैलिटी टेस्ट लेती हूँ ना, इंट्रोवर्शन इज़ वन ऑफ द मोस्ट prominent traits that come up. This video is going to be a story of all the struggles that I've faced during MBA, during consulting, generally in my last 10 years of corporate life, and then sharing some tips which has made my life slightly easier, if not fully easier. अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, आई एम श्योर यूल रिलेट टू मी समवेयर एंड या होपफुली दीज टिप्स विल कम इन हैंडी फॉर यू एज वेल. Hi everyone, welcome to Insider Gyaan. मेरा नाम सौमी है. I am an IIT Delhi and ISB Hyderabad grad, and on this channel I share all about my career experiences so that some of my learnings might help you as well. अगर इनमें से कोई भी चीज़ आपको इंटरेस्टिंग लगता हो so please consider subscribing to the channel. तो मेरे को ये वीडियो का आइडिया कैसे आया? सबसे पहले तो ना कई सारे लोग कमेंट्स में पूछते हैं कि हे आई एम एन इंट्रोवर्ट, कैन आई डू एन MBA, हे आई एम एन इंट्रोवर्ट, इज़ कंसल्टिंग फॉर मी, दोज काइंड ऑफ क्वेश्चंस. एंड वैसे तो मुझे लगता है कि इंट्रोवर्शन इज़ अ ट्रेट विच कैन मेक दीज फील्स अ लिटिल डिफिकल्ट फॉर यू, बट ऑनेस्टली इतना रेलिवेंट नहीं है. देर आर वेज अराउंड इट एंड obviously जब आप काम कर रहे होते हो you have to find a way to push yourself out of comfort zone, right? But I definitely agree that there are a lot of struggles that introverts go through and here were some of mine. सबसे पहले तो बात करते हैं about client presentations or any kind of public speaking in general. As an introvert हम लोग की first tendency होती है कि हम बात करें ही ना. कोई भी meeting हो रहा हो तो why talk unless the question is directly pointed towards you, right? मतलब बात करना ही क्यों है. और जब बात करो, जब आपके पास ऑप्शन नहीं है बात करने के अलावा, तब ये टेंडेंसी होती है कि you prepare and over prepare till everything is rehearsed and if anything goes out of the plan you feel nervous. Unless you are fully prepared you probably feel like you shouldn't contribute क्योंकि maybe बाकी लोगों को इस रूम में हमसे ज़्यादा आता है. एंड ये जो थॉट है ना, उससे एटलीस्ट मैं तो काफ़ी नर्वस फील करती थी इनिशियल स्टेजेस ऑफ माई करियर में. एंड आई वुड हैव अ टेंडेंसी टू नॉट जनरली शेयर माई पॉइंट ऑफ व्यूज़ और यू नो टॉक आउट इन जनरल अनलेस द क्वेश्चन इज़ लाइक पॉइंटेड टूवर्ड्स मी और आई एम सपोज टू प्रेजेंट बिफोर हैंड. कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये जो ट्रेट है इट ऑल्सो पुशेज यू टूवर्ड्स परफेक्शनिज्म कि सब कुछ पता होना चाहिए. एंड दिस बिकम्स इवन मोर डिफिकल्ट व्हेन यू बिकम अ सीनियर, क्योंकि एज अ सीनियर प्रोफेशनल you are not supposed to go into the details. Someone else is supposed to get the details for you. So for you to be comfortable with details that you are getting from someone else and then presenting it is a little bit challenging as an introvert for me. और अगर एक दो मीटिंग होना महीने में तो फिर भी चलता है because you know you can prepare and over prepare for that one meeting 3-4 days in advance and deliver well. But in a field like consulting where I've been for about 8 years, आपको literally daily client presentations देनी होती है. Daily नहीं तो twice a week तो minimum. And with that kind of pace, obviously it's not possible to prepare and over prepare a lot. So yeah, as an introvert it's always difficult to put yourself out there and speak your mind and you know like just be there and comfort the client as well. Secondly, एक और चीज़ जहाँ पे दिक्कत आती है वो है क्लास पार्टिसिपेशन. MBA में ना आपको क्लास पार्टिसिपेशन के अलग से मार्क्स होते हैं. So you don't have a choice but to participate in the class. But you know, because you don't really want to talk out in front of so many people, you will probably hesitate. I mean, I used to at first, but then धीरे धीरे मुझे realize हुआ कि यार मैं नंबर तो नहीं खो सकती, I need grades. So then I started like preparing and pushing myself and putting out points. But actually the good thing is, you know, as an introvert, अगर आप एक दो points भी कर दोगे ना, there's a lot more chance of you being more relevant than extroverts who are okay to speak up at every given opportunity, but they might not make sense every time. So as an introvert अगर एक दो point बोल दोगे तो वो relevant हो जाएगा and आपको usually ज़्यादा पॉइंट्स ही मिलेंगे मार्क्स कंपेयर टू एक्सट्रोवर्ट्स हु आर मेकिंग लाइक 10 पॉइंट्स बट मे बी ओनली वन ऑफ देम इज रेलिवेंट. नंबर 3 इज अटेंडिंग सोशल गैदरिंग्स.
ना ऑब्वियसली एमबीए में तो पार्टीज वगैरह होते ही है, जब आपको दैट्स द प्लेस वेयर आउटसाइड क्लासेस एंड असाइनमेंट्स यू बॉन्ड विद पीपल एंड मेक फ्रेंड्स। तो एमबीए में तो फिर भी ठीक है, आपके सब पीयर्स हैं मोस्टली, बट ज़्यादा आफत मुझे तो एटलीस्ट तब आती थी जब कॉर्पोरेट इवेंट्स अटेंड करने होते थे, ऑफिस के नेटवर्किंग इवेंट्स अटेंड करने होते थे। वहाँ पे थोड़ा सा विजिबिलिटी वाला फैक्टर भी आ जाता था। स्पेशली करियर के शुरुआत में ना आपको बहुत प्रेशर होता है कि पार्टनर्स के सामने विजिबल भी होना है, सिर्फ काम करने से इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। एंड कंसल्टिंग का टॉक्सिक बोलो या ना टॉक्सिक बोलो, बट दिस इज़ वॉट इट वॉज एटलीस्ट इन कंसल्टिंग, एंड नॉट जस्ट इन कंसल्टिंग, एनी कॉर्पोरेट इट इज़ लाइक दैट दीज डेज। तो एज एन इंट्रोवर्ट मुझे तो बहुत ज़्यादा प्रेशर लगता था उन इवेंट्स को अटेंड करने में। ऐसा लगता था कि यार क्यों करना है, मतलब अच्छी खासी चल तो रही है ज़िंदगी, वाई डू यू हैव टू गो एंड मेक स्मॉल टॉक। एंड द वर्स्ट पार्ट इज़ इट्स नॉट जस्ट अबाउट अटेंडिंग द इवेंट्स, राइट? Attending the events is pointless unless you are actually going and talking to the people who you don't know over there. Strangers के साथ तुम बात करो, तो शुरुआत में मुझे बहुत awkward लगता था जाके बोलना कि hey, I think we haven't met yet, I am so and so, I work for this and this team, yeah, nice to meet you, whatever. But also धीरे धीरे मैंने नोटिस किया कि जैसे टाइम बीतता गया वैसे वैसे I felt a little bit more comfortable attending these events. Actually, I never was comfortable attending these events, but I became comfortable going and say hi to random people in the events with time. Also, I've noticed that, एक बार अगर आप conversation start कर दो, तो वो awkwardness ना थोड़ी सी कम हो जाती है। एंड हमारे दिमाग में हमें लग रहा होता है कि यार मतलब अगला वाला इंसान क्या सोच रहा होगा हमारे बारे में एंड ऑल दैट, बट ट्रस्ट मी, किसी के पास इतना टाइम नहीं है तुम्हारे बारे में सोचने के लिए। इट्स ऑल इन योर हेड। फोर्थ पॉइंट, एज एन इंट्रोवर्ट आई नेवर एंजॉयड वर्किंग इन ग्रुप्स। मेरी हमेशा टेंडेंसी होती है कि मैं अकेले काम करूँ। व्हेनेवर देयर इज अ पीस ऑफ वर्क, let me try and do it first myself. And let's face it, आजकल के ज़माने में it's not possible, right? Like MBA colleges तो आपको force करेंगे to sort of work in groups because there are group assignments and you are marked as a group, you are given grades as a group. And obviously जब आप corporates में जाओगे वहाँ पे भी you will have to depend a lot on other divisions, on other people for knowledge sharing, or even when you are working in teams, obviously everyone has their own role to play. पर जैसे कई बार ऐसा भी होता है कि in a meeting setting you would want to discuss and find out or like come to an outcome, but as an introvert मेरी हमेशा टेंडेंसी होती थी कि मैं पहले से सोच के जाऊँ अपने पॉइंट्स, पहले से प्रिपेयर करके फिर जाऊँ और फिर जाके अपने पॉइंट्स शेयर करूँ rather than डिस्कस करके to come to the points myself. वर्क सेटिंग्स में तो ऑनेस्टली बहुत ही हैम्पर कर सकता है नॉट लाइकिंग वर्किंग इन ग्रुप्स, बिकॉज आपके ऊपर अननेसेसरी प्रेशर पड़ जाएगा। लाइक how much can you really do yourself, right? But well, that's a struggle that I have faced as well. And lastly, I want to talk about this constant tendency to communicate via written communication like emails or chats rather than orally or in a meeting. In fact, generally मुझे लगता है कि introverts को ना रिटन में कम्युनिकेट करने की ज़्यादा आदत होती है। अगर जैसे कोई ओरल मीटिंग भी है तो आई थिंक इंट्रोवर्ट्स वुड हैव अ टेंडेंसी टू make written points beforehand so that you can go and participate properly in an oral meeting. I mean, एक तरह से तो ये अच्छी बात है कि आप prepare भी हो रहे हो, and when you are communicating via written communication, the listener or whoever is on the other side has some notes or some reference point to refer to. They don't have to retain everything in their head. So एक तरह से तो अच्छा है. Also as an introvert कई बार ये लगता है ना कि जब फॉर एग्जाम्पल कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, व्हेन यू कैन कम्युनिकेट समथिंग वाया मैसेज, वाई इज़ द अदर पर्सन वांटिंग टू कॉल मी, वाई डज दिस पर्सन वांट टू गेट ऑन अ Zoom call or meet face to face. So ये सब होगा. As an introvert, you will feel all of these things, and I think you'll have to find a middle ground कि कई बार तुम you will give in, कई बार you will push back a little bit and then somehow manage to survive. Then there are of course other traits like you don't want to have a social life. तुम अपने कंपनी में बहुत ज़्यादा खुश होते हो, एटलीस्ट मैं तो बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ अपने कंपनी में, reading books, painting and doing nothing basically. Don't like too many guests,
visiting you, don't like hosting parties or anything. So वो सारे issues तो होते ही है, मतलब जो मैंने भी face किए हैं. But now quickly moving on to some of the tips that have helped me make my life a little bit more easier from a work point of view. So my number one tip, and it might feel a little bit cliche, is just not to be impatient and wait it out. Time के साथ साथ ना आप इन सब चीज़ें में बहुत comfortable हो जाते हो. For example, if you are feeling underconfident at the start of the career, if you are not feeling like putting yourself out there, I would strongly recommend you still push yourself out of the comfort zone and persevere. अपने आप को like लोगों के सामने डालो, थोड़ा सा uncomfortable situation में डालो. Only when you do that, you will feel that you are adapting to it and you are able to embrace it for good. थोड़े से अगर conversations के बाद आपको लगे कि यार बहुत ही embarrassing conversation था, बहुत ही awkward था, it's okay. The other person is not even thinking too much about it. Just swallow your like embarrassment or pride. घर जाओ, chill मारो, दूसरे दिन आके फिर से वो embarrassing conversations करो. I mean, that is the only way to sort of grow. And more than grow, also adapt. With time, your discomfort will reduce, and I can promise you of that. Secondly, for presentations and meetings, if you think you feel more confident by preparing and over preparing, unfortunately, you have to give yourself that time and space to prepare and over prepare. Otherwise, you will not feel confident, and if you are not feeling confident, then you will not be able to do your best. So do whatever it takes, make points in written, notes bana lo, rehearse a little bit in front of the mirror, do whatever it takes to feel confident so that you can deliver. Thirdly, let's talk about social gatherings. Now for this, I would say that attend fewer gatherings but make the most of it during those few gatherings. What I mean by that is, अगर तुम्हारी साल में 10 पार्टी हो रही है तो प्लान की तुम्हें 4 ही अटेंड करने होंगे, बाकी 6 अटेंड नहीं करने हैं. बट उन 6 पार्टीज़ में ना जाके अपनी प्रेजेंस को फील करवा के आओ, सब लोगों से बात करके आओ, अपनी विजिबिलिटी पूरी तरह से शो करके आओ. गो एंड टॉक टू एज मेनी स्ट्रेंजर्स, एज मेनी न्यू पीपल एज पॉसिबल ओवर देयर, and that will help you in the long run. Because क्या होता है ना, as an introvert, when you are meeting more people, it is draining you out of energy. So if you attend all 10 parties, then you will feel very tired at the end of each day. उसके बजाय तुम्हें टायर्ड फील करना ही है तो why not attend just 4, give in your best and just feel tired for after those 4 social gatherings. बाकी 6 you can choose to ignore because at least hopefully you have made a bigger impact in those 4 that you attended. Fourth, let's talk about working in groups. Now इसमें ना the thing that has worked best for me is delegation. So what I would prefer to do is, whenever there are group projects, and which are every project, I would have one call where I can coordinate and understand everyone's point of view, etc., and use that meeting to delegate सबका अपना अपना role क्या होगा, every person what they are going to be doing, and then at the end of it come together again and discuss, and that's about it. Basically what happens is, when the delegation is clear, it makes it very simple for you as an introvert to get your own time and space and pace also and speed also to work on whatever you have to, because you need a little bit of calm around you. तुम शोर में नहीं काम कर सकते as an introvert, तुम्हें सोचने की ज़रूरत है थोड़ा सा. So you get that space. And generally delegation also helps because then everyone knows what they're responsible for, what their ownerships are. It's easier for me to do it as a manager now, but of course it was a bit of a struggle as a junior. But at that point of time, I would always encourage people or my managers. I would tell them that, okay, so let me own this piece and let me get back to you on this. More often than not, people would be okay, like your manager would be okay with that. If they're not, they'll probably give you some additional direction, but see what can work for you best.
लास्टली कमिंग टू रिटन कम्युनिकेशन, यहाँ पे दो चीज़ें हैं जो मुझे काफ़ी हेल्प किया है. नंबर वन इज़ ऑफ कोर्स if I know that I am comfortable more with written communication, then before any kind of oral meeting or presentation, I would make my notes, and that was my way of preparing for things. Or say for instance, I have to talk to my junior team members and give them some work, I will always send them the instructions in written over chat or over email first, and then have the call to walk them through the instructions, because that's just how I am more comfortable, via written, not via oral. Secondly, something that has helped me a lot is fixing specific times. Now ऐसा होता है ना कई बार कि जैसे कुछ तुम्हें डिस्कस करना है, you and जिसके साथ भी तुम्हें डिस्कस करना है, you both of you are in office. Probably it's easier for you to go and ask that person then and there at their desk and come back, but as an introvert you might not feel like doing so. और उस टाइम पे अगर आप एक specific time and space like एक meeting setup कर दो, then everyone knows that okay ये agenda है इस meeting का, this is why we are meeting. So जो वो स्मॉल टॉक करने का प्रेशर है व्हेन यू आर रैंडमली टॉकिंग टू अ पर्सन टू क्लैरिफाई समथिंग, वो वाला ऑकवर्डनेस भी चला जाता है. एंड जनरली सिंस एवरीवन इज अवेयर, यू कैन जस्ट गेट टू द पॉइंट, टॉक अबाउट वट एवर वॉज ऑन एजेंडा एंड देन एंड इट देयर, राइट? इट्स अ मच मोर क्लीनर and a much more comfortable feeling for an introvert, I feel. Before ending the video, I just want to say that obviously introversion के साथ कई सारे challenges आते हैं, you know, under confidence, anxiety, imposter syndrome, ये सब कई बार introversion के साथ as a package में आता है. But I want to take this moment to sort of remind you of your powers as well. Number one is you may talk less, but think about the brighter side. जब भी आप बात करते हो, आप relevant points में बात करते हो. So you are most likely a lot more liked and respected by your colleagues and people around you. You also are always well prepared, and that's your superpower, because without good preparation, you don't feel comfortable. You plan ahead well, you have a great futuristic vision. You also have great listening skills because of being an introvert. You are not in the constant pressure of reacting to things, but you have a tendency to like absorb things around you, and that is your superpower. So हर सिचुएशन में जैसे कि मुझे लगता है कि अपने नेगेटिव्स को पॉजिटिव्स में हमें खुद ही बनाना पड़ता है. And yeah, so being an introvert, these are the things which you can use to your advantage. If you want a book recommendation, read this book called Quiet, The Power of Introverts. It's a beautiful book which will give you a lot of tips on, you know, how to deal with introversion, and not just deal, but how to convert it into a superpower for yourself. That's about it for this video. Hopefully you found some of it helpful. All the best for your introversion to extroversion journey. I don't think it ever becomes comfortable, you know. कभी भी आपकी natural tendency तो नहीं होगी जाके लोगों से बात करना, but with time you learn a lot of things and things become easier. Anyway, I'm going to close the video now. अगर कोई भी और question, comments वगैरह हो तो comments में डालो, and please like, share, subscribe, and yeah, I'm going to see you soon. Till then, bye.